Hello everyone, this is Nehal from Figment Global Solutions. Welcome to our exclusive webinar on Master Error-Free TDS Return Filing with Tax CPC. So as I can see, we have a very good turnout today with some more participants still joining in. This highlights how important and challenging TDS return filing is for many businesses. So before we start our session, let me give you a quick introduction of our company. Incorporated in the year 2012, we are one of the leading companies working in the domain of tax technology solutions, particularly TDS and GST. With a team size of over 200 plus expert professionals, we are based in Mumbai, Delhi, Chennai, Jaipur, and Nagpur. We are proudly serving India's leading banks, PSUs, mutual fund companies, insurance companies, corporates, and many more. So this was a quick profile of our company. Now, moving on to introducing our speaker for the session. Himanshu is the director of Figment Global Solutions and a recognized expert in the domain of TDS compliances. With over 13 plus years of experience, he has helped a crucial role in providing the businesses in simplifying their TDS related compliances through his expertise. So now let's proceed to how our tax CPC application can assist you in simplifying the entire TDS return filing process. I'll hand over the session to Himanshu. Over to you now. Thank you, Nehal. So let me share my screen. So my screen is visible. Yes, it is. So good afternoon, everyone. So this side, Chartered Accountant Himanshu Chordia. I am here to give you how the error-free TDS return can be filed with the assistance of the tax CPC. So let me showcase you first of all what challenges the companies are facing at the time of filing TDS return. So normally the errors that can be happen at the time of filing of TDS return may be the incorrect PAN information. Incorrect PAN information can be on account of invalid PAN number. It may be on account of inoperative PAN number. Inoperative PAN numbers means where PAN or Aadhaar is not linked. Sometimes we are unable to upload the data of the TDS reductions. Incorrect TDS rates we have applied. The rate at which we are supposed to deduct the TDS, we have deducted on the wrong rate. So there are the many challenges that we are facing at the time of filing the TDS return. So how we can overcome these challenges, how our tax CPC solution assist the companies in validation of all these things so that there should be no issue after filing of the return. Because what will happen when we are filing the TDS return will be processed by the traces department, and traces department is issuing the notices, whatever the errors are there in our TDS return. So, what methodology we are suggesting to all the attendees that you need to import the data and validate the data on a monthly level. Because normally, what companies are doing, they are doing the validation after the end of the quarter. They are preparing the data. Once the quarter is ended, they are preparing the return, they are filing the return. So, what is our methodology that we are suggesting? Do the data validation on a monthly level, right? So you can do the data validation on a monthly level. After that, whatever errors that in the data that will come, our application will showcase you what type of the errors that you are having in the data. So normally there are the four types of the returns that normally the companies are filing. One is the form number 26Q. Under the form number 26Q, you are filing the TDS on the vendor payments and the TDS on the other than salary that you are filing under the form number 26Q. Then one is the form number 27Q where you are filing the TDS reduction on the non-resident. Form number 24Q is on the TDS on salaries. And the form number 27Q, it is on account of the TCS deduction, TCS recoveries that the companies are doing. On that, the 27Q is filing. So these are the four returns that the companies are preparing normally. So let me give you the quick overview how the application will work and how the working can be done to minimize the error and to get the data pre-processed before filing of the return or before remittance also. So what we are suggesting,
the companies are supposed to make the remittance on the 7th of the next month, right? So what we are suggesting, upload the data in the application on second, third, fourth, fifth, process the data, see what are the errors are there in the data, rectify that data and upload, and thereafter make the remittance. So I'm just showcasing you the application side also, how it will work. Let me show you my screen. So my screen is visible. Yes, it is. So this is our application login page where you can go on the tds.figmentglobal.com. You can create the user ID and password. Just go there and just log in. Once you go on the login, the dashboard will come. So dashboard will give you the return summary, whatever the returns that we have filed on the quarter one, quarter two, quarter three, quarter four. What are the status of the return? What are the top deductees on the data that we have uploaded? Normally many of the times you are receiving the notices from the income tax department कि in January month आपका remittance ज्यादा था, February month में आपका remittance कम हो गया. What is the reason behind it? So you can analyze all your transactions, TDS transactions, चालान remittance, whatever the चालान you have paid. आपने जनवरी महीने में कितना रेमिटेंस किया, फरवरी में कितना रेमिटेंस किया, तो यू दिस इज द डैशबोर्ड टाइप ऑफ द थिंग वेयर यू कैन हैव द क्विक ओवरव्यू, राइट? सो यहाँ से आप डेटा को ओवरव्यू कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्या क्या डेटा गया, कौन कौन से रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं. Now, the company want to prepare the return error free. So, what is the procedure? What methodology the company needs to adopt? So, first of all, once we are providing the login, you have to go on the deductor tab. On the deductor tab, you can create the deductor, right? तो आपका 10 नंबर होगा, आपको यहाँ पे एक ऐड डिडक्टर का ऑप्शन दिखेगा. जस्ट क्लिक ऑन द ऐड डिडक्टर ऑप्शन. If you have the old console file, just choose the console file and upload the console file. As soon as you upload the console file, your deductor will get created. So this is the first option of creating the deductor. Deductor means जो 10 नंबर में आप TDS का डिडक्शन कर रहे हैं उसका आपको एक लॉगिन क्रिएट करना है. तो if you are not having the console file, you can put your 10 number, PAN number, डिडक्टर नेम, ये सारी चीजें आप मैन्युअली फिल करके भी इसको सबमिट करेंगे तो आपका डिडक्टर क्रिएट हो जाएगा. Now the question is arises, many of the corporate is having the multiple deductor. आपके 5 10 numbers है, 10 10 numbers है, 15 10 numbers है, 20 10 numbers है. So how you can manage all these deductor in a single go? और आप सारे डिडक्टर्स को एक एक करके तो ऐड नहीं कर पाएंगे, आप बल्क में कैसे ऐड कर सकते हैं? सो इन अवर एप्लीकेशन वी हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ इंपोर्टिंग द डिडक्टर. सो आप देखेंगे यहाँ पे एक होवर दिखता है. आप होवर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वर्किंग रिटर्न का ऑप्शन आएगा. Under that, the data import option is there. Under the data import, we have the template. You can see there is a template of client import. So आप ये client import का template download कर सकते हैं. Once you download the client import template, so this template is visible. Not yet. 1 minute. Yes, Now it's it is visible. visible. Yeah. Right. So how to create the deductor on a multiple level? सो आप यहाँ पे आपका पैन नंबर लग सकते हैं कंपनी का, आपके जो मल्टीपल 10 नंबर्स है आप यहाँ पे फीड कर दीजिए. जैसे कि मैं एक आधा 10 नंबर 00183. इफ यू पुट द पैन नंबर, यहाँ पे आप मल्टीपल पैन नंबर्स आपके ऐड कर सकते हैं, पैन नंबर्स लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे उनका एड्रेस लिख सकते हैं. ये सारी चीजें आप फिल कर दीजिए. एड्रेस, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिख के यहाँ पे हमारे पोर्टल पे ट्रेसेस भी कनेक्टेड है ताकि आपको ट्रेसेस पोर्टल पे ना जाना पड़े, यहीं से आप सारी ट्रेसेस रिलेटेड एक्टिविटी कर सके. तो इफ यू आर हैविंग द ट्रेसेस आईडी एंड पासवर्ड यू कैन पुट हियर आल्सो. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स के भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं. ये डालने के बाद में आप ये सारे टेम्पलेट को भर के सेव कर दीजिए. सेव करने के बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं. आप सीधे आप इसको सेव करने के बाद में यहाँ पे डेटा इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज फाइल करके आप इस चीज को टेम्पलेट को आप अपलोड करेंगे तो आपके जो डिडक्टर्स हैं वो सारे क्रिएट हो जाएंगे. सारे डिडक्टर्स क्रिएट होने के बाद में आप यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, सारे डिडक्टर्स दिखेंगे, सारे 10 नंबर्स आपके जितने भी है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे. वॉट एवर डिडक्टर्स यू आर हैविंग, सारे डिडक्टर्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे. दिस इज द एडमिन लॉगिन, जहां से आप कोई भी डिडक्टर में काम करना है तो आप जा सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी कंपनी में बहुत सारे 10 नंबर है और हर हर 10 नंबर के अलग अलग ऑथोराइज पर्सन है. सो दिस इज द एडमिन पैनल. यहाँ से हर 10 नंबर के राइट्स आप असाइन कर सकते हैं.
आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ सेटिंग्स का टैब है। वंस यू क्लिक ऑन द सेटिंग टैब, यहाँ पे आपको यूजर कंट्रोल दिखेगा। तो यू जस्ट गो ऑन द यूजर कंट्रोल। आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कंपनी में अगर 10 यूजर्स, 15 यूजर्स, जो भी यूजर्स है, यू कैन क्रिएट द यूजर्स। जस्ट क्लिक ऑन द एड यूजर ऑप्शन एंड यू कैन क्रिएट द यूजर। यूजर को हम लोग रोल्स एंड परमिशन भी असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड परमिशन। सो आपको अगर यूजर को सिर्फ व्यूइंग का राइट देना है तो आप व्यूइंग का राइट दे सकते हैं, उसको डाउनलोड्स का राइट देना ही नहीं देना है, तो यहाँ से आप सारे आपके उनके जो ऑथोराइजेशन और परमिशन यू कैन क्रिएट द रोल्स ऑल्सो। सो दिस इज द वेरी बेसिक। सो आपको जब भी काम स्टार्ट करना है एप्लीकेशन में, जस्ट क्रिएट द डिडक्टर, create the multiple users, multiple roles and permission you can assign. Now the main activity is that how we can do the activity in the application, right? So यहाँ पे आप देखेंगे एक होवर दिखता है हमारे इसमें। तो होवर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो तीन टैब दिखेंगे, वन इज द वर्किंग रिटर्न, वन इज द ट्रांजेक्शन्स एंड वन इज द चालान। नाउ आपको वर्किंग रिटर्न करना है। राइट नाउ आप समझ लीजिए कि ये मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी मंथ का डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप वर्किंग रिटर्न में क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। तो चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है डेटा इंपोर्ट, डेटा अलोकेशन, डेटा एरर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन एंड जनरेट द एफयू फाइल। राइट नाउ यू वांट टू इंपोर्ट द डेटा। अब आपका ये 20 मार्च चल रहा है आपका। अब आप चाह रहे हैं कि मैं मेरा फरवरी महीने का जो भी हमने रेमिटेंस किया हम उसको चेक करना चाहते हैं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ये डेटा 7 मार्च के पहले भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सिस्टम से डेटा निकल जाता है, 1 मार्च को, 2 मार्च को डेटा निकला होगा, तो यू कैन जस्ट गो ऑन द डेटा इंपोर्ट ऑप्शन। आप जैसे ही डेटा इंपोर्ट ऑप्शन के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा इंपोर्ट ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड करके एक ऑप्शन दिखेगा, एक बल्क ऑप्शन दिखेगा। तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर में आपको डेटा फीड करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है। आपके किसी भी प्रकार के रिटर्न रहे, 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ, किसी भी प्रकार के रिटर्न रहे तो आप ये ऑल इन वन ट्रांजेक्शन करके हमारा टेम्पलेट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो वंस यू डाउनलोड द टेम्पलेट, आपका टेम्पलेट ओपन होगा। ये टेम्पलेट में आपका जो भी आप ईआरपी यूज कर रहे होंगे, ईआरपी से डेटा आप ये टेम्पलेट के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने चालान का आपने ऑलरेडी रेमिटेंस कर चुके हो तो आप यहाँ पे चालान की डिटेल डाल दीजिए, चालान का डेट डाल दीजिए, 12 मार्च 2025। चालान नंबर डाल सकते हैं आप, चालान का अमाउंट डाल सकते हैं। राइट, तो मैं चालान का अमाउंट डाल दिया हूँ। तो 10,000 का मैंने चालान अमाउंट पेमेंट किया है। अब ये मैंने किसके अगेंस्ट में पेमेंट किया है, यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए, पैन रेफरेंस नंबर दिए जहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन आईडी लिख सकते हैं। आपके सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हुआ होगा या वाउचर नंबर लिखा होगा तो आप ये यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको कभी वाउचर नंबर से डेटा को फिल्टर आउट करना रहा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वाउचर नंबर लिख देता हूँ मैं। अब मैं पैन नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने ये पैन नंबर के अगेंस्ट में 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे अगर आपका कोई वेंडर का कोड है तो ये अकाउंट नंबर की फील्ड पे आप वेंडर का कोड भी लिख सकते हैं ताकि आप उस चीज से ढूंढा ढूंढा जा सके। यहाँ पे हम 194 जे के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करें तो यहाँ पे सारे सेक्शन देखेंगे आपको, ड्रॉप डाउन के अंदर सारे सेक्शन दिख जाएंगे। आप सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। टोटल अमाउंट हमने 1 लाख का सपोज करके पेमेंट किया है। डेट ऑफ क्रेडिट थी हमारी 20 फरवरी 2025। डेट ऑफ डिडक्शन इज ऑल्सो द सेम, और हमने इसके ऊपर 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया। सो इस प्रकार से आप सारा आपका जो भी सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से डेटा निकलेगा आप ये टेम्पलेट के अंदर में फीड कर सकते हैं। वंस यू फीड द डेटा इन द टेम्पलेट, इसको आप सेव कर लीजिए। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका ऑल इन वन ट्रांजेक्शन टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। ये आपका अगर एसएफटीपी के थ्रू अगर इन पिक करना है फाइल को तो एसएफटीपी के थ्रू भी पिक किया सकता है, या आपको ब्राउज करके चूज फाइल करना है तो ये सैंपल फाइल आपका जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डेटा इंसर्ट का प्रोसेस क्रिएट होगा। तो अब डेटा इंपोर्ट होने के बाद में क्या प्रोसेस होता है, तो आप देखेंगे पहले प्रोसेस में दिखेगा आपके कितने ट्रांजेक्शन इंसर्ट हुए। ये मैंने ऑलरेडी एक सैंपल डेटा 1,46,000 लाइन आइटम को ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा हुआ है, विच टेक्स नॉट मोर देन 1 मिनट ऑफ द टाइम टू इंसर्ट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा ऑल्सो। तो आपको पहले प्रोसेस में आएगा कि कितना डेटा इंसर्ट किया है, डेटा के अंदर में कुछ किसी प्रकार की एरर तो नहीं है वो दिख जाएगा। उसके बाद में आपका चालान और डेटा इंपोर्ट का एक प्रोसेस आ जाएगा एंड आपका ये टेम्पलेट बन जाएगा कि आपका जो डेटा इंसर्ट हुआ उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि आपने जब डेटा इंसर्ट किया है, जैसे 1,46,000 का डेटा इंसर्ट किया है उसमें कौन से सेक्शन का कितना डेटा है, 194H का कितना डेटा है, IB, IA, इसका ट्रांजेक्शन अमाउंट, टीडीएस अमाउंट क्या है। तो ये सारा आपका एक समरी बन जाएगा और ये समरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेमिटेंस, ताकि आपको कोई आपके हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना रहे तो ये रिपोर्ट डाउनलोड होंगे एक्सेल फॉर्मेट में।
आप ये रिपोर्ट को देख सकते हैं, ये रिपोर्ट को आप देख के आपके अप्रूवल ले सकते हैं कौन से सेक्शन में आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर द इंसर्शन ऑफ द डेटा। अब नाउ हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद एरर, इसके अंदर डेटा में कुछ एरर है क्या, ये हमको अगर चेक करना है, तो इसका हमने टू स्टेप सिंपल प्रोसीजर बनाया हुआ है। जैसे आप डेटा इंपोर्ट करेंगे, आपके जितने भी डिडक्टिव है जिनका आपने टीडीएस डिडक्ट किया, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो ये जैसे डिडक्टिव आपके क्रिएट होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पैन नंबर आपके वैलिड एंड ऑपरेटिव है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने 5 टैब बनाए: अनवेरिफाइड पैन नंबर, इनवैलिड पैन नंबर, इनऑपरेटिव पैन नंबर, वैलिड पैन नंबर एंड 206 से भी नॉन फाइलर। अभी हमारे सिस्टम के अंदर में, हमारे डेटाबेस के अंदर में, अगर कोई पैन एक बार अगर वेरीफाई हो गया है ग्लोबल लेवल पे, नॉट ऑन योर कंपनी लेवल, अगर ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी ये पैन नंबर वेरीफाई हुआ है और उसका स्टेटस पैन वैलिड एंड ऑपरेटिव है, तो आपको वापस से वो पैन नंबर को वेरिफिकेशन का करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आता है इनऑपरेटिव पैन नंबर। अब इन ऑपरेटिव पैन नंबर अगर आप जैसे टैब पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये इन ऑपरेटिव पैन नंबर्स की लिस्ट दिखेगी कि ये सारे पैन नंबर्स आपके इन ऑपरेटिव है। लेकिन बिफोर रेमिटेंस आप चेक करना चाहते हैं कहीं ये पैन नंबर ऑपरेटिव तो नहीं हो गए। इन ऑपरेटिव का मतलब होता है ये पैन और आधार से लिंक नहीं है। अगर पैन आधार लिंक नहीं है, तो हमको उनका हायर रेट से टीडीएस डिडक्शन करना होता है। तो अब इसका आप देखेंगे, हमारा जैसे इन ऑपरेटिव में गए तो एक टैब ऊपर ओपन हो गया पैन वेरिफिकेशन का। तो आपको ये पैन वेरिफिकेशन के टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप ये पैन वेरिफिकेशन के टैब को क्लिक करेंगे, सारे पैन नंबर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट इनसाइड पोर्टल से और इनकम टैक्स पोर्टल से वेरीफाई होके इसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जस्ट क्लिक ऑन द पैन वेरिफिकेशन बटन, ताकि सारे पैन नंबर वेरीफाई हो जाए। उसी प्रकार अभी जैसे इसमें अनवेरिफाइड पैन नंबर हमारे कुछ भी नहीं बचे, तो आपको अनवेरिफाइड पैन नंबर के अंदर भी पैन वेरिफिकेशन का टैब आएगा अगर कुछ रहते हैं तो। उसी प्रकार 206 ए बी नॉन फाइलर, 206 ए बी नॉन फाइलर के केसेस के अंदर में भी अगर वो नॉन फाइलर से फाइलर हो गए, तो हमको उसका टीडीएस डिडक्ट करना नहीं होता है हायर रेट से। तो सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस इज सिंपल, डू द डेटा इंपोर्ट। सेकंड प्रोसेस इज डू द पैन वेरिफिकेशन। आफ्टर पैन वेरिफिकेशन वी आर सजेस्टिंग टू फैच द लोअर डिडक्शन डेटा, राइट। अभी आपने डेटा इंपोर्ट किया, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने गलत डेटा इंपोर्ट कर दिया, तो वो डेटा को आपको डिलीट करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के अंदर में राइट हैंड साइड में हमारा पैनल है। पैनल में यूजर एक्टिविटी लॉग करके आपको टैब दिखेगा। तो आप यूजर एक्टिविटी लॉग में चले जाइए। ये आपने जो भी डेटा इंपोर्ट किया है इसका सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। आप जो डेटा इंपोर्ट करें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये फाइल को डिलीट करना है, तो यहाँ रिमूव का बटन है, आप रिमूव जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा इस फाइल से जो आपने चढ़ाया था वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस और मल्टीपल फाइल्स चढ़ाते हैं, तो जितनी फाइल्स हम चढ़ाते जाएंगे वो फाइल्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव दिखता है, तो हमारा सिस्टम आपको एरर देगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आया हुआ है, क्या आप इसको फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप यस बोलेंगे तो वो ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन को आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर अगर डबल ट्रांजेक्शन आपके इंसर्ट हो रहे हैं, तो मल्टीपल फाइल्स यू कैन इंपोर्ट और डेटा उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। और डिलीट करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एक्टिविटी लॉग में जाके। तो आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया, गलत फाइल रही तो डिलीट करने का ऑप्शन बता दिया हमने आपको, डिडक्टिव के अंदर पैन वेरिफिकेशन बता दिया। नाउ ये सब करने के बाद आपके लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का पूरा मैनेजमेंट दिया हुआ है। सो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो सारे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके टेन नंबर के अंदर जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे आएंगे लोअर डिडक्शन के सर्टिफिकेट, तो हमने दो ऑप्शन दिया है। या तो आप ऐड कर सकते हो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मैन्युअली। यहाँ पे आप पैन नंबर डालिए, कस्टमर आईडी, सेक्शंस, ये सारी चीजें डाल के आप ऐड कर सकते हैं मैन्युअली लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स को। और या तो फिर आप डेटा फैच कर सकते हैं। फैच कैसे करना है मैं उसको आगे आपको प्रोसीजर बताता हूँ। एक बार ये डेटा फैच हो गया, तो आपको दिखेगा ये किस पैन नंबर के लिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है, फॉर व्हाट सेक्शन इट इज सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन, व्हाट इज द सर्टिफिकेट नंबर, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट इट इज वैलिड, एंड व्हाट रेट द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड व्हाट इज द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अमाउंट। और हमारे ड्यूरिंग द ईयर जितने भी बार कंजम्पशन होते रहेंगे, यहाँ पे अमाउंट कंज्यूम के अंदर में ऐड होते रहेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट का लिमिट खत्म हो जाता है, तो हमारा सिस्टम आपको एरर देंगे, ये सर्टिफिकेट का लिमिट खत्म हो चुका है। अब इसको आप इसके ऊपर आप लोअर रेट से टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, ज्यादा रेट से डिडक्ट करना है। तो आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मैन्युअली ऐड कर सकते हो और ट्रेसेस कनेक्ट के थ्रू फैच कर सकते हो। ट्रेसेस कनेक्ट की सारी फंक्शनलिटी मैं आपको एक बार नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ। तो ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके आ गए। देन आपको जाना है डेटा एरर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन में। आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया, पैन वेरिफिकेशन कर लिया, लोड डिडक्शन सर्टिफिकेट फैच कर लिए। देन जस्ट गो ऑन द डेटा एरर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन। जैसे ही आप जाएंगे, आपका जो भी डेटा इंसर्ट किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या एरर्स है आपके वो दिखने लग जाएंगे। अब आप एरर देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट डिटेल नॉट अवेलेबल। कोई ट्रांजेक्शन में आपने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ट्रेसेस पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट आप उसको लोअर डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दे सकते। हायर टैक्स रेट ड्यू टू इन ऑपरेटिव पैन नंबर।
इसका मतलब ये होता है कि पैन नंबर इनऑपरेटिव है, जहां पे पैन और आधार लिंक्ड नहीं है और आपने कम रेट से टीडीएस डिडक्ट किया है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कि ये कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ हमारे 786 ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना था एंड यू डिडक्टेड ऑन द लोअर रेट्स। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लिमिट एग्जॉस्टेड। आपका 50 लाख का सर्टिफिकेट था, आपने 60 लाख का उससे ट्रांजेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है, ये आपको एरर दिखने लगेगा। टीडीएस ट्रांजेक्शन बेस लिमिट वैलिडेशन। अब आपको ये ट्रांजेक्शन्स देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे एक फिक्सिट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे ट्रांजेक्शन्स आपके दिखने लग जाएंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पे आपका लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट का लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो आपको आप एक मिनट ओपन करना था। सो यहाँ पे आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट की जो भी फ्लैग्स वाले केसेस है वो इट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेस लिमिट वैलिडेशन है, जहां पे आपका 50,000 का लिमिट था, 50,000 से 1 लाख का आपका ब्रीच हो गया वो लिमिट और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो वो केसेस आएंगे। कहीं पे आपने शॉर्ट टीडीएस डिडक्ट किया है, सेक्शन 194 सी का सेक्शन था, आपने 2% से टीडीएस डिडक्ट करना था, कंपनी का केस था, आपने 1% से डिडक्ट किया, तो ये सारे केसेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कहाँ कहाँ पे आपके एरर्स आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी फाइल्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके सारे एरर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एरर्स को ठीक करने के बाद आप जनरेट एफयू फाइल का हमारा क्लिक बटन है, उसको क्लिक करेंगे। ये मंथली लेवल पे आप एक्टिविटी करिए क्वार्टर एंड के, ताकि आपके ये सारे एरर्स आप ड्यूरिंग द मंथ आप उसको क्लियर कर ले, या आपको रिकवरीज करना है रेमिटेंस के पहले तो आप कर सकते हैं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का शॉर्ट डिडक्शन या शॉर्ट डिफॉल्ट का इशू ना आए बाद में। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया हुआ है ट्रेसेस कनेक्ट का। ये एरर प्रोसेसिंग अगर आपकी क्लियर हो गई, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि एरर्स अब लास्ट मोमेंट में अगर हमने डेटा इंसर्ट किया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रिटर्न हमको आगे प्रोसीड करें, हम इसको बाद में ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमने बल्क एक्शन का ऑप्शन दिया है, रिव्यू ऑल कर दीजिए आप। जैसे ही आप रिव्यू करेंगे तो आप ये सारे ट्रांजेक्शन आपके आगे पुश हो जाएंगे और आप एफयू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये 26 क्यू का बताया, 24 क्यू, 27 क्यू एंड 27 ई क्यू, सभी में इसी तरह के ऑप्शन अवेलेबल है एंड आप यहीं से एफयू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द फंक्शनलिटी ऑफ द ट्रेसेस कनेक्ट। तो ट्रेसेस कनेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको हमारा ये एक्सटेंशन एक बार ऐड करना है। यहाँ पे अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी एडेड है तो आप यहीं से कंसो फाइल अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जितने भी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके 10 नंबर में आए हैं, वो हमारा जो आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का टेबल दिखाया था वहां पे आके ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाएंगे। यहीं से आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर कुछ एरर आया तो। फॉर्म 16 को जनरेट करना है, अप्लाई एंड डाउनलोड करना है, कुछ डिफॉल्ट आया उसकी एक्टिविटीज चेक करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ट्रेसेस के अंदर में जो भी एक्टिविटीज आपको करना है, तो यहाँ से आप कंसो फाइल अप्लाई करना, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, फॉर्म 16 अप्लाई एंड डाउनलोड, जनरेशन, सारी एक्टिविटीज आप यहीं से कर पाएंगे, आपको अलग से ट्रेसेस पोर्टल पे नहीं जाना होगा। तो ये ट्रेसेस कनेक्ट के थ्रू ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ईयर एंड हो जाता है तो वी वांट टू जनरेट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आल्सो, राइट। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट्स एंड डाउनलोड करके एक सेक्शन है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स हमने दी हुई है। 206 AB रिपोर्ट, देन चालान अलोकेशन रिपोर्ट, डिडक्शन रिपोर्ट, कई जगह पे हमारा एक्सेस डिडक्शन भी होता है। एक्सेस डिडक्शन को हम एरर में नहीं दिखाते क्योंकि उसका डिफॉल्ट नहीं आने वाला, फाइनेंशियल डिफॉल्ट। बट कंपनीज वांट टू चेक द एक्सेस टीडीएस डिडक्शन, तो दे कैन जनरेट द रिपोर्ट एंड दे कैन एनालाइज कहाँ पे एक्सेस डिडक्शन हुआ है इन ऑपरेटिव पैन की रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमारा जो मेन रहता है टैक्स ऑडिट डेटा, तो यहाँ पे रिटर्न फाइल डेटा समरी करके एक रिपोर्ट है एंड टोटल डेटा समरी रिपोर्ट है। तो ये दोनों रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो क्लॉज 34A B C जो टैक्स ऑडिट के अंदर में हमको डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो वो डेटा का आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और आप अपने ऑडिटर्स को दे सकते हैं। तो ये आपका एक रेगुलर एक्टिविटी हो गई, जहां पे किसी भी प्रकार के अगर आपके डिफॉल्ट आ रहे हैं तो ये प्री प्रोसेस होंगे। प्री प्रोसेस होने के बाद रिटर्न फाइलिंग के पहले आप उसको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करें तब आपका किसी भी प्रकार का एरर ना आए। तो ये सारे एरर्स आप यहाँ पे देख के डाउनलोड करके इस एरर को फिक्स करके डेटा आपका बना सकते हैं और इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे या Sorry to interrupt you. We have a request from some of the attendees that they need the conversation in English as they are unable to understand Hindi. Okay, got it. So, so these are the errors that has been there in the default. Whatever defaults you are having, you can analyze all these default and you can rectify all these default. Just click here and download the default. And after downloading, you can analyze
and you can rectify the default. Once you have downloaded, if you want to see the transaction, if you want to update the transaction, just click on the transaction tab. Whatever transactions you have uploaded, it will be seen here. You have to just click on the transaction. If you want to do the editing in any of the transaction, you can do the editing by just click here. You can do the editing of the transaction amount, TDS amount. You can update the amount and you can update the file once you have done the rectification of your default. So what activity that we have to do? It's a very simple process. First, do data import. Second activity, do the PAN verification. Just go on the directory. Just do the PAN verification. Just click on the tab of the PAN verification. It will verify on the PAN, all the PAN on the live level and update the status. And on the basis of the status, our system will process the data at what rate the TDS needs to be deducted. Then go on the Traces Connect, fetch the lower deduction certificate. Once you fetch the lower deduction certificate, all the lower deduction certificate will come under the quick links, lower deduction certificates. All the certificate will come here, and whatever transactions that are going on each and every month, it is not like that it is evaluating on the quarterly level. It will evaluate on the monthly level. If suppose first quarter has ended, in that only 30,000 has been consumed. So in the next month, if it is in the next quarter, if it is consumed more, then it will give the further consumption. So it will be consumed accordingly, and the default has been computed on the basis of the consumption. So this is the lower deduction certificate allocation. So this is the all how you can do the error-free filing. Now, suppose if you file the return, if any error is coming, so how you can rectify that error? So you can see on the top hand side, apart from regular, there is a option of the correction also. So just click on the correction tab, apply the console file from the Traces Connect. You have to go on the correction portal. Once you go on the correction portal, just go on the data import, import the console file. Whatever rectification you want to do the rectification. Then do the data error processing validation. Whatever corrections you have done in that, if any error is there, it will be reflected here, and thereafter generate the FU file. So this is a very simple process for offline correction. If you want to do the online correction, then you have to go on to the Traces portal and do the online correction. So online correction we cannot do from this web portal. For online correction, you have to log in onto the Traces portal and do the online correction on the Traces portal. If you want to do the offline correction, then just go on the data import, import the console file, whatever on whatever quarter you have to file the correction return, import that console file and rectify the things and generate the FU file. So this is the process of filing the correction return. Now, many of the times the company we have the very structured data. They are using the SAP or other modules they are using. So for that thing, without manual intervention, because right now, whatever process I have shown for the import of the data, I have shown that you have to convert the data into the template. Now, we have one more mechanism of importing the data without any manual intervention or without converting the data into the template. So you have to go on to the setting tab, just go on the import control, just click on the import mapping. So you can design your self template. So how the self template can be designed? I'm just showcasing you one of the things. So self template can be designed the file that you are uploading. So that is having the uploaded file header, right? So this is the one time activity that you have to do. This is the uploaded file header and this is the template header. You have to map your uploaded file header with our template header. Once you do the mapping, your self template will be designed and you can name your template. Let me just showcase you. You can name your template, import mapping template name. And once you go on to the import option, this template name will come under the bulk option. There's a two option under the import. So you can design your template so that without manual intervention, your data will get imported. Just go on the data import. There's a two option. One is the standard. Standard means to the template. Standard template. These are the template. You can do the template insert. Second option is the bulk. Under the bulk, whatever template name you have designed, just select here and just upload the file. Choose the file from here and you can pick the file from the SFTP also. So this is the procedure through which you can minimize the error. Now in the SAP data, sometimes the negative entry is also coming. Negative entry means there are one positive entry, we have done the reversal of that entry. So in our import mechanism, once you do the import, it will automatically adjust the positive and negative entries also. So many of the things that has been required has been already incorporated in the application so that there should be no error and whatever errors are there, it should be reflected under the data error processing and the validation. So this is the basic flow of our application. I encourage everyone, if you have any questions regarding the same thing, you please let us know so that we can discuss and we can elaborate more and more.
So this is all basics of the application, how you can go for the error-free filing of the TDS return. Himanshu, there is one question from the attendee. They're asking for 24Q annexure to quarter 4 form validation. Right. It is in the question answers or chat? It is chat, In the right? chat. Yeah, everybody can put their questions in the chat box, so we'll address them one by one. Right. So I am 1 minute. I'm just checking all the questions and taking one by one, whatever question is coming first. So we are sending one question is, can you send the recording also? So we will send the recording. We have the audit log option. Yes, the audit log option is available in the application. I'm just showcasing you that thing. So you can go on the reports and download section. And under the reports and download section, there is a option under the custom reports of the audit log. And you can download the audit log, whatever activities has been done. Apart from that, under the profile menu, there is a user activity log is there. So whatever activity the user are doing, you are able to track all the activity at what time and what type of the things the user has done. So suppose they have done this import, client import, deductive 15 jet, whatever activities they are doing on the portal. So audit log of all the things is maintained here. So line item wise, group wise, all the types of the audit logs, user activity log is maintained here. Then second question is, sorry, just read your question that you are unable to understand Hindi. I have tried to speak in English only. Then one question is coming, demo for the 24Q annexure 2 for the quarter 4 validation. Right. So for the quarter 2, I'm just showcasing you the activity. So you have to just click on the quarter 4, 24Q, right? Just go on the, once you click on the quarter 4 and the 24Q, you can see one more option is coming. That is the employee. So just click on the employee option. You can add the employee here. Whatever employee you are having, you can add the employee. So this is the one more employee table is coming under the quarter 4 24Q. Now what activity our application is doing, I'm just showcasing you that template also and how we are preparing the data for the quarter 4 24Q. So on the if you go on the data import, the template is coming. So for the annexure A, so all-in-one transaction is suffice for the annexure A. There are the two annexure that we need to file, annexure A and annexure B. Annexure 1 or annexure 2. So annexure 1, all-in-one transaction is good. For the annexure 2, we have the option of 24Q. We have the option that you can see two templates are there. 24Q BV1 salary annexure basic. And if you want to upload the details, because it is lengthy also. If you go for the detail, then it is a very lengthy annexure. Then you have to fill all the template and you can upload the data. I'm just showcasing you the basic one right now. Just download the basic template. If you open the basic template, so it is a very simple template. You have to put your employee name, employee code, name of the employee. Then whether it is opting for the old regime or new regime, you can select from grade of enrollment, then total of previous salary, gross salary, perquisite. So these are many columns are there. Everyone will know. So this template needs to be first of all feeded all the allowances and all the things, because on the basis of this only the form 16 has been generated for a particular employee. So you have to fill this column. So you can see there are the many columns which has been mentioned as the system calculated. You can see here the option is coming, it is system calculated. So you are not supposed to feed the figure in this column. So wherever the system calculated are there, it will automatically calculate the figures. Even if you put the figure, it will calculate automatically only. So all the option will come for the system calculated, house property, other sources income, then 80C deductions. If you are having it for the old regime, all these regimes are there. Then you can file the things. Then whatever the TDS for the whole year, these two column also you are not supposed to feed, because on the basis of the annexure part one, whatever we are filing. So on the basis of annexure one, annexure two, quarter one, quarter two, quarter three, and quarter four, it will automatically populate how much the total amount of the TDS has been deducted for the particular PAN number, and how much is the TDS needs to be deducted. It will be all automatically calculated and on the basis of that, once you upload this data, once you fill this data, save the data, then go here and do the data import.
just go here and do the data import salary annexure basic, choose the file and upload the data. Once you upload the data, it will first of all do the employee level verification. So here you can see all the employee will come. Let me showcase you one of the login. 1 minute, where the data is there. In this data is not there on the quarter four. 1 minute. I'm just showcasing. 1 minute. Just hold on. I'm just taking the new user ID and password. Hello. So sorry for the delay. So you can see once you import the data, you have to go here and just import the data by selecting the annexure to template. After that, you can see all the employee will be created here. So here more than 6,000 employees are there. You can see, I'm just showcasing that thing. It is the full face is coming. You can see here that all the employees is coming here. Just hold on. More than 7,000 employees are there in this login. You can see this is the PAN number, what is the deductor name, what is the 15 CA flag, from which date to which date the salary is payable. In the summary, you can, if you want to add the new column, you can add the column from here, whatever you want, but it is a summary data we are showing. Total taxable income and total tax that is payable and total tax that is deducted and what is the short deduction. So you are able to analyze all these things and you can download. Just click here and you can download the report wherever the short deduction is there. This is all system will calculate. System will calculate the annexure 1 and annexure 2 difference also. And on the basis of this annexure 2 data, whatever the tax has been deducted and whatever the tax is required to be deducted, on the basis of that short deduction will come. I'm just showcasing any of the case where the short deduction is coming. So this from here you can see here is one of the case. So you can see here the tax payable is 56,000 and we have deducted the zero tax. So short deduction is coming of 56,000. So this is how you can evaluate the short deduction of annexure 2 and you can prepare your return. After this, all the short deduction is zero. You can prepare your TDS return by on a click only. So just import the Excel template and you can analyze the short deduction cases. I hope this is clear. In case anything, if you require more in this, please let me know. Annexure 2 I've already shown. Regarding the cost and other things, Nehal will tell. Aadhaar number and PAN number is compulsory for 24Q salary employee. Yes, if it is not available, PAN number or Aadhaar PAN number, if it is not available, then the TDS needs to be deducted at the rate of the 20%. Otherwise, the default will come. Our system will handle all these things. If you have the wrong PAN number is there or no PAN number is there, our system will deduct the TDS. Yes, whether surcharge validation are done in 27, the transition is also whether yes. So the question is very good from Govind is there. So surcharge validation in the 27Q is already incorporated in our application. Once the amount is exceeding the 50 lakhs or 1 crore, the surcharge will be calculated. If you have not collected the surcharge, our system will give you the error. Second question is that whether surcharge calculation are done transaction wise or aggregate wise. Right now, as per the law, we have to do the surcharge calculation on the basis of the aggregation, right? But on the traces portal, currently it is doing on the transaction wise only, not on the aggregate wise. I hope it is clear.
Then we have to deduct the 20% if the employee not linked Aadhaar and PAN, right? Very correct. You are supposed to deduct the TDS at the rate of the 20% if the PAN and Aadhaar is not linked in case of the employee. Yes. So the question is, can it possible we can send the form 16A and the form 16 to our vendor and employee from the software? So there are the two options. Many of the companies want to send the form 16 through their domain only. If they want to send the form 16 through their domain, then we will give the one exe file through that they can send the form 16 through their domain. If you want to send the form 16 through our domain, then also it is feasible. It is feasible at our end also. Yes. Now, question is, can you please show the consumption? So where can we get the challan consumption detail, including the portion unconsumed? Right. So this part I skipped also. I just give the this thing. So you can see on this drop down, there is an option of the challan also. Once you open the hover, so there is an option of the challan. Just click over the challan. So you can see these are the challan details, whatever challans you have imported. So there is a two option. Once because there is a possibility one can import the deductive details separately and challan details separately, right? So if you have imported the challan details separately, then you can see this is the challan detail that is available and how much amount is allocated. This is a challan amount and how much amount is allocated on this challan and what are the balance amount that is available. So what are the challan that is unconsumed, you can track on this balance amount. So from here, you can track the challan details. Now, if you have imported the challan details separately, right? How you can import the challan detail? Option is there. Just go here, go on the data import option. On the data import option, there is a template of challan import. Just download this challan import template. Just click on the challan import. You can see the details will come. So here the gray field is mandatory. So you just put BSR code, challan date, challan number, and challan amount. Save this file and import the file. All the challan get imported. So the challan is imported, deduct is imported. Now you want to allocate the challan and deducti. So there is an option of data allocation. So it is the auto allocation system is there. Just go on the data allocation, click on the start allocation. You can see what are the challan that is available and how many deductees are allocated and how many deductees are unallocated. So these are the details that has been available on all the screen. And you can make the group. At the time of the compensation, you can make the group. Right now, suppose you have paid the challan on the basis of company, non-company. You have paid the challan on the basis of the TDS section, on the basis of the month. So the deductees will be aggregated and you can just drag and drop the challan and you can allocate the challan. So this is a very simple procedure and it will be automatically also allocated. So in this fashion, you can do the challan allocation and whatever challan that has been remaining, just click here and you can get the details of all challan. What is the balance amount is there, what are the unconsumed amount, how many deductees allocated. If you want to check which deductees has been allocated to this challan, just click here, view deductive transaction. So you can see, just click on the allocated. These are the deductive transactions that has been allocated to this challan. So in this way, you can manage all the challan related thing also. So I think we have answered all the questions that has been asked in this. If anyone is having any other questions, so regarding the AMC cost and other things, Nehal from our team will communicate. So is this software integrated with Tally? One question is coming. So right now, the direct integration with the software we have not done, but whatever raw data has been extracted from the Tally software, you can import that data directly into our application. So how you can do the import? I'm just showcasing you one more time. Under the setting tabs, we have the import control, right? You have to do the import mapping. This is the one-time activity because whenever you are exporting the data from the Tally, it is coming under the same format only. Just go on the data import option, do the import mapping. How you can do the import mapping? Suppose you have downloaded the file from the Tally. So that will come as the uploaded file header, right?
So you have to map if suppose the transaction date is coming in the tally. So you have to map as the transaction date in our template header. So this is the one-time activity for the mapping is there. For that, our team will assist you for the mapping purpose. Once this mapping is done, you can directly import the data that has been extracted from the tally directly into our application. So the direct import is visible. Any other questions? One new question is there. Possible to, yeah, if it is possible to check from PAN number to TAN number, right? Right now it is not required under the this you can say TDS related module. We have one more module that is 26 years reconciliation. Under that 26 years reconciliation module, you can check the TAN number from the PAN number also. So if you just give the PAN number, we will provide you the TAN number, and vice versa also. If you give us the TAN number, we can provide you the PAN number. We are doing that activity on the managed services also. If you provide us the list of the TAN number, we can provide you the PAN number and vice versa also. Now, second question is that at the time of return filing, employee not linked Aadhaar and PAN not linked traces showing default. Now it is rectified. Now I can rectify. So income tax department, if it is the case of the last year, so income tax department has given this flexibility to link the PAN and Aadhaar up 31st of May. If the same has not been done and the default has been arises or the PAN and Aadhaar is linked after 31st of May, right? Then you are not able to rectify that thing because what income tax department is doing, income tax department is maintaining the date of the linking of PAN and Aadhaar also. If the date of transaction is after that linking, then it is okay. If it is before that linking and Aadhaar, and if it is of the current year, then we cannot escape from this default. We have to recover that amount from the particular employee and pay to the income tax department, and we have to rectify the refund, return. After remittance only, we can only rectify. Otherwise, there is a no feasibility. If it is before 31st May, then it can be rectified, but after 31st May, it is not able to rectify if the transaction date is there. Any other questions? Name it. If someone is having any other question, please let us know. We are happy to answer. Our purpose is that if anyone is filing the TDS return, there should not be any default. One can rectify the return before filing of the return. All the default that has been there, you can rectify before filing of the return. And that is visible through our application. So I guess we have been able to answer all the questions asked by the attendees. One more is there, Himanshu, Yes, 206 yes, AB. yes, yes. Yes. 206 AB and 206 CA compliance check is also integrated. Yes, it is integrated in our application. Let me showcase you that thing. Once you import the data, the deductees will be created. Just click on the deductee. Here is a tab of 206 AB non-filer, right? So you can see the PAN verification status. There is a 206 AB non-filer is there. Just do the PAN verification. It will automatically verify if any 206 AB non-filer is converted to the filer category. And if whatever is there, you can do the PAN verification on a click. You are not supposed to go anywhere outside the system. Just click on the PAN verification. It will update the status, PAN Aadhaar linking, 206 AB status. All these activities has been done from here on. So you are not supposed to do anywhere outside the system. PAN verification, just click on the PAN verification. It will again re-verify the data. And it will give you the date when the last time the PAN number has been verified. 22nd October 2024, this PAN number has been last verified. If you just click, it will again re-verify the data. If anyone is converted to the filer category, our system will automatically give the benefit for that thing. It will not populate the error for that records. So it is integrated.
Anything more? One more question is coming under the question answer. Could you please show us where we can get the challan consumption detail that already replied? How we can address our error of unexpected error? Please check in log file while submitting correction of 24Q return. So this type of the error that you are saying, if this type of the error is coming, that is not coming if we are preparing the return through our application. So these all things we are handled in our application. So unexpected error, this error is coming because mainly the reason behind the same thing I'm telling you, unexpected error is coming on account of the special character that has been coming in your name or any other field. Special character means comma, dot, dollar sign. If this type of the if this type of the special character has been mentioned anywhere in your file, then unexpected error is coming at the time of the creation of the 24Q return. So if you remove this type of the error, then error will not come. Otherwise, also if you are preparing the return through tax CPC, then this type of the error will not come. I hope I answered this question. One more question is coming, whether threshold validation are done considering the transactions for all quarter or only the current quarter. So the answer is that the threshold validation that we are doing, we are considering the transactions of the full year, not only of the quarter. So if you see, if any tax deductions has been done, you can see I am just showcasing you one more example for that thing where the transaction base limit validation has been done. So you can see under the data error processing, one error is coming. 1 minute. So that type of the error has been considered. 1 minute is some internet. If you see, there are the transaction. In this error, the transaction base limit validation error is coming, right? If we see for this transaction, if we download the file for this particular transaction, or if we go for the fixed it option, so you can see right now the data is not there because it is dummy file. So the transaction base limit validation will come here also. You can check it out, and it is considering the full year. Full year transaction is coming. Right? It is not of the quarter. It is considering the full year transaction. I hope I answered the question. We are considering the full transactions of all the quarters and not of the current quarter for the threshold limit validation check. Anyone can raise your hand also if you have any questions. We can happy to answer you. So I think we can conclude the event, Nehal. Yes, I guess we have been able to address all the questions that have been raised by the So attendees till now. one more question is coming. What are the other services you are providing? So we have the four products currently we are doing. One is the tax CPC, one is the 26 years reconciliation, and third one is GST solution, full stack GST solution we are having. Apart from that, we are having the notice litigation management system. So we are have the 4 5 systems, and apart from that, we are doing the MCA and MSME validation also on the bulk level. So these are the various activities that we are providing. So I think Neil, we can conclude. Yeah. So in case if the attendees do have any other questions, you can reach out to us on our mail ID. I'll drop my email ID in the chat box, so you can reach out to us over this mail. And regarding your question for pricing and other details, we'll address you separately over call or over separate mail. Office at the Yeah, rate you put your phone number and mobile email ID both. Yeah, I'll put office at the rate taxcpc.com is my mail ID.
So thank you everyone. Thank you all. Yes. Mobile number डालते हैं marketing में. Chat box. Yes, we will Yeah, share the recording also. yeah, we'll share the recording also, and I'm putting my number also over the chat box. And so thank you everyone, and thank you Himanshu for your time. It was very insightful. Thank you so much. Yeah. Okay, thank you. We'll conclude.